Hello students, I hope you are doing well, studying properly and learning all your concepts. The 3 questions. King John was the king of England. He did not, like anyone else, look richer than himself. The abbot of Canterbury was rich. He was enjoying luxurious life. The king did not like the abbot. He was in great anger. तो बेसिकली एक किंग जॉन थे जो इंग्लैंड के किंग थे और उन्हें नहीं पसंद था कि कोई भी उनसे ज़्यादा रिच लगे. तो वो क्या हो गए, जब एबट ऑफ कैंटरबरी, एक जगह है कैंटरबरी, वहाँ के जो एबट, जैसे प्रिंस होते हैं, क्वीन होती है, वैसे एक पोस्ट होती है एबट. जैसे उन्होंने देखा कि वो काफ़ी रिच है, वो क्या हो गए, किंग जॉन गुस्सा हो गए. He sent his soldiers to bring the abbot. उन्होंने soldiers को बोला एबट को लेकर आओ. The soldiers brought him before the king. The king asked, "Who is greater, the king or an abbot?" Then how bold of you to enjoy much better than the king. You are plotting to become the king of England. It is a crime, therefore you must die. किंग ने बोला कि क्योंकि एबट बड़ा नहीं, किंग बड़ा होता है, तो तुम कैसे किंग से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो. You will have to die. The abbot was greatly frightened. He said very humbly, "Your Majesty, I have never used others' money for my use. Is it a crime to spend my own money for my needs?" एबट ने थोड़ा डर के पर प्यार से बोला कि सर, मेरे तो खुद के पैसे हैं ना. आई हैव नेवर यूज्ड एनीबडी एल्सेस मनी, सो मैंने क्या क्राइम किया है. Yes, replied the king. Then he added, "It is a crime to live grander than the king." King ने बोला, मुझसे ज़्यादा rich होके रहना is a crime. The abbot trembled in fear. Abbot क्या करने लग गया, कांपने लग गया. The king continued, "But I shall give you a chance to get pardon." King ने बोला, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए एक चांस दूंगा. Answer my 3 questions correctly to my satisfaction. He said, मैं आपको 3 questions बताऊंगा, उन्हें आंसर करना है. Then he gave out the questions. Tell me how much I am worth. He said, मुझे बताओ कि मैं कितनी worth का हूँ. How long will it take for me to go around the world? He asked कि मुझे बताओ कि मुझे पूरे world के around जाने में कितना time लगेगा. And what am I thinking now? उन्होंने बोला, मुझे बताओ कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ. The abbot listened. Abbot ने सुना. His confusion and fear increased rapidly. Question सुन के वो और क्या हो गया, डर गया और confuse हो गया. He could not speak. उससे बोला नहीं गया. Finally, begged for time to answer. 3 weeks were given. The abbot left the place in a dejected mood. Abbot ने क्या बोला, टाइम मांगा और उसको कितना टाइम दे दिया, 3 weeks. On the way, he went into Oxford University and Cambridge University. He met great professors and learned men. He asked them for the answers to their 3 questions. They were not able to find the answers. He was returning home safely. On the way, he met his shepherd boy. The shepherd asked the abbot, "Why are you looking sad, master?" So, एबट ने क्या किया, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से मिला, पर उसे कोई आंसर ही नहीं मिल पाया. तो जब वो वापस आ रहा था, ही मेट हिज शेफर्ड. हु इज़ अ शेफर्ड, जो शीप का ध्यान रखता है. और शेफर्ड ने क्या बोला कि आप इतने सैड क्यों मास्टर. My dear shepherd, the king has set 3 questions for me. I have to find answers to his satisfaction or else die for plotting against the king. The questions are difficult. I have only 3 days to reply the abbot. तो एबट ने सारी सिचुएशन शेफर्ड को बताई कि कैसे किंग को लग रहा है कि वो उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, तो ही विल डाई अगर उसने 3 क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दिया. The shepherd said, "My lord, let me go in your palace." He said, "Please मुझे अपने पैलेस जाने दो. I shall meet the king." मुझे भी एक बार किंग से मिलना है. I shall answer the
3 questions to his satisfaction. उसने कहा कि मैं आंसर करूँगा. Then he added, people say I look very much like you. Therefore, permit me to wear your dress. The king will not be able to find out. उसने बोला मैं आपके कपड़ों में पहन के जाता हूँ और एक बार king से मिलता हूँ. The abbot agreed. Immediately, the shepherd put on Abbott's dress. He exactly looked like the abbot. He then went to meet the king. वो abbot बन के king से मिलने गया. The king had not expected the abbot so soon. He was not able to find the difference. He said, I am happy, abbot. You have kept your promise. Now are you ready with the answers? उसने पूछा क्या तुम answers के लिए ready हो? The shepherd in the abbot's dress replied, Yes, your majesty, I shall try to answer to the best of my ability. उसने बोला shepherd ने हाँ मैं ready हूँ answers के साथ. The king asked, What am I worth? I am the king of England. उसने पूछा What am I worth? तो abbot ने यानी कि shepherd ने क्या बोला? Your majesty, replied the shepherd, according to the Bible, Jesus, the king of heaven and earth, was sold for 30 pence. Your worth must be 1 pence less. It should be 29 pence. तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि Jesus और किंग ऑफ हेवन और अर्थ जो है वो कितने के लिए बिके थे? 30 पेंस के लिए. तो आपकी कितनी वर्थ हुई? 29 पेंस. The king had a sense of humor. He started laughing. After some time he gave out the second question. How soon can I ride around the world? कितनी जल्दी मैं पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकता हूँ? The shepherd said, Your majesty, you must rise with the sun, ride with it the whole night. In this way you will be able to go around the world in 24 hours. उन्होंने बोला कि आप सन के साथ सुबह उठो और जहाँ जहाँ सन जाता है वहीं जाओ. तो ऐसे आप 24 आवर्स में पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकते हो अगर आप सन को फॉलो करो. Again, the king had a merry laugh. Then he looked seriously at the shepherd and said, Tell me quickly, what am I thinking now? उसने पूछा कि बताओ अभी मैं क्या सोच रहा हूँ. Sir, you are thinking I am the abbot, but I am not the abbot. I am only his poor shepherd. I have come to ask pardon for abbot and for myself. मैं उसने सच्चाई बता दी king को. Then he quickly removed abbot's dress. Now he looked like a shepherd. He knelt down before the king for pardon. उसने king से माफ़ी मांगी. The king was not angry at all. He started laughing and he laughed for a long time. वो हंसने लगा. Finally he said, I am pleased with your intelligence. I shall make you abbot. उसने क्या किया? उसने shepherd को abbot बना दिया. But the shepherd said, Your Majesty, I cannot read and write. I cannot become an abbot. उसने बोला कि मैं तो पढ़ लिख ही नहीं सकता. मैं कैसे abbot बनूंगा? The king said, Then you shall receive £1 a week as long as you live. Go home and tell the abbot I am forgiving him. तो king ने बोला कि ठीक है अगर तुम नहीं कमा सकते so you will get £1 a week जब तक तुम रहोगे. And abbot को भी क्या मिल गई? Forgiveness मिल गई. Now, word meaning. Abbot, a man who is the head of the religious community. जो man religious community का head होता है हम क्या बोलते हैं? Abbot. Frightened, full of fear, डर जाना. Humbly, in a simple and polite way. Grander, impressive or more important. Grander मतलब impressive या फिर बहुत ज़्यादा important. Dejected, sad and depressed. Dejected का क्या मतलब होता है? Sad और depressed. Permit मतलब allow. Worth, having a particular value. Objective type questions. Fill in the blanks. What are the words? Seriously, ability, professors, plotting, shepherd, sense, confusion, learned and increased. You are dashed to become the king. क्या था? You are plotting to become the king. ऐसे you will answer these 4 questions. This has also been written to be answered एक ही तरीके से वैसे ही जैसे आप बाकी कर रहे हो. Subjective type questions. A. Answer the following questions.
How was King John? King John कैसा था? King John did not like that anybody else was richer than him. You will do these questions same तरीके से क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया तो अब आप ये खुद कर सकते हैं. Write true or false. The abbot of Canterbury was rich. This is what? This is true. ऐसे ही आप ये सारे भी करेंगे. Who said? किसने बोला? It is a crime to live grander than the king. ये किसने बोला होगा? King ने ही बोला होगा, है ना? This question will also be done in the same way. Next, you will do these 4 questions on your own. D. Complete the spellings. ये क्या है? Abbot. Question. Wealth. Majesty. This way you will do all of these questions. Now we have listen and speak. Sound of double O. Groom, bloom, fool, wood, blood, cool, door, good, hood, wool, loom, moon, soon, pool and tool. Writing skills. Make sentences of the following words. आपको following words के क्या बनाने हैं? Sentences. King. What do you make a sentence out of king? I want to become a king one day because kings are rich. Same तरीके से आप sentences बनाओगे किसके साथ? Crime, question, worth and shepherd. अब हम पढ़ेंगे क्या? Grammatical skills. Unscramble the letters to find the collective nouns of the following. You need to unscramble letters to find collective noun. Bees का क्या होता है? Swan. Flowers का bouquet. Ants colony. C-O-L-O-N-Y colony. इसी तरीके से आप इनके भी क्या बनाओगे? Collective nouns. B. Find the opposite words, pair from the given column and write them in the given space. ये आपको क्या करना है? Opposite word लिखना है. Column A and column B. Loud का क्या होता है? Silent. Healthy का unhealthy. Win is lose. ऐसे you have to do all the other 3 questions. Next है Match the synonyms given in column A and column B. आपको क्या करना है? Column A and column B के synonyms match करने हैं. क्या होते हैं synonyms? Words जो एक जैसे एक ही meaning होता है but 2 अलग words होते हैं. जैसे small का क्या हुआ? Tiny. Like का क्या हो गया? Similar. Full का क्या हो गया? Complete and so on. Now we have activity skills. Make some words from the given words. Satisfaction से आपको और words बनाने हैं. क्या हो सकता है? SAT sat हो सकता है और FACT fact हो सकता है. Increased से और words बनाने हैं तो क्या बन सकता है? SAD sad बन सकता है और क्या बन सकता है? IN बन सकता है and so on. ऐसे आप Cambridge University और Forgiven से भी words बनाओगे. I hope you understood this chapter properly. Read it again and revise all the questions to understand it even better.